Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. So today date is 12 June 2021 and I am teaching you chapter number 2 and name of the chapter is our internal organs. So name of the chapter is our internal organs. So in this chapter, student, I am explaining you about the internal organs of human body. So what are the topics? Let's do little recapitulation what we have done in the previous videos. So what are the topics I have covered or I have explained? That is brain. Brain is also a internal organ of our body. Then heart and is another internal organ of our body. Then lungs, and after that I explain you stomach. Okay, now yesterday in the previous video I am telling you about the stomach is let's do little recapitulation of that, and then I will explain you another internal organ of the body, that is kidney. Is it clear? So let's do little recapitulation of digestive system, and after that I explain you another system of our body, that is the kidney. Now see stomach. When I explain you about stomach, so first of all, what are the parts of stomach? Is a part of digestive system. So what are the parts of digestive system? Write according to the sequence. I have already written the sequence in the previous video. So write all the part in sequence so that what are the function of all the organs you are able to understand easily. First part is the mouth. After mouth the food moves. Okay, first is the mouth. What happened in the mouth? The food is broken into smaller pieces with the help of a teeth, and tongue helps mixing the food with the saliva, and from where we get the saliva from the salivary glands. And after that we swallow the food. Swallow means from the mouth food goes down, and from which pipe the food goes down, that pipe is known as food pipe. And from the food pipe then the food enter into your stomach. Is it clear? Then the food enters with the help of a food pipe, the food enter into the stomach. So if it is asked in the exam, in which part of the digestive system maximum time the food remains, that is in your stomach, 3 to 4 hours or 4 to 5 hours the food remain in your stomach. And from the stomach the food, you can also see this in the picture. Okay, see in the mouth from the food pipe it comes down into the, this is your stomach. Is it clear? This is your stomach. Maximum time the food remains in the stomach, and after the stomach the food moves into the, this is a small intestine. This portion is known as small intestine, and maximum food is absorbed. Okay, maximum food is absorbed in the small intestine, and in the inner walls of the small intestine there are blood vessels. So from here the absorbed food goes into the blood vessels, and after that see this portion, this is your large intestine. Then the food goes into the large intestine. Is it clear? This is large intestine as it is shown
in the book, this large intestine, and in large intestine water and salt and are absorbed, and the food which is waste that goes out of the body through the anus. Is it clear? That goes out of the body through the anus. And liver and pancreas are the two glands which also help in the process of digestion. Liver secretes bile juice and pancreas secrete pancreatic juice. So this we have done in the previous video, and in detail you want to see the digestive system, then see the previous video, because now I have done just little recapitulation of digestive system. Now today we will start with the another important internal organ of our body, that is kidneys. Is it clear? So first of all, student, let understand this is a part of which system? That is, kidney is the part of excretory system. Excretory system. Is it clear? Kidney is the part of a excretory system. So what are the parts of excretory system? That is kidney, and how many kidneys we have? Two kidneys. Is it clear? Left kidney and right kidney. Is it clear? Excretory system. So let's understand what are the parts of a excretory system. That is, the parts of a excretory systems are kidney, and how many kidneys we have in our body? That is two kidneys. Okay, this is the first part. Second is the ureter. ureter, ureter, and number of ureter are also two. Left ureter and right ureter. Next part is the urinary bladder. And next is the urethra. So these are the parts of your excretory system. So the next internal organ which we will study, that is kidney, and it is a part of a excretory system. So first of all, student, understand what are the parts of a excretory system. That is kidney. How many kidneys we have? Two kidneys we have, left kidney and right. Next is how many ureter are present? That is also two, left ureter and right ureter. Then next part is urinary bladder. Okay, next part is urinary bladder, and the next part is urethra. So these are the parts of your excretory system. ठीक है, अब वेयर इट इज इन द बॉडी. ठीक है, ये जो हमारी वेस्ट है, ठीक है, जिसको कमर बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, सो अगर इफ आई, ये जो हमारी वेस्ट है, ये जो कमर है हमारी से इससे थोड़ी सी ऊपर है ये किडनी. इज इट क्लियर? जो हमारी वेस्ट होती है जिसे कमर बोलते हैं, आपके बैक साइड में, आई एम टीचिंग यू, ये हमारा फ्रंट है. सो बैक साइड में हमारी वेस्ट से थोड़ा से ऊपर है, क्या है? आपकी किडनीज हैं.
ठीक है. How many kidneys we have? We have 2 kidneys. So first of all, let's draw the diagram of the kidney, and after that I give you the explanation one by one. So this is the diagram of your kidney. Is it clear? First of all, let's understand what is the position of kidney, that I have already explained you. Now let's understand what is the function of kidney. Function of kidney to filter the blood. What does it mean? It means to remove impurities from the blood. जो ब्लड में भी जो वेस्ट मटेरियल है, जो बॉडी के कोई यूज के नहीं होते, उन इम्प्योरिटीज को ब्लड से प्यूरिफाई या फिल्टर करने का काम कौन करती है? आपकी किडनी करती है. ये आपके किडनी का फंक्शन है. इज इट क्लियर? फंक्शन ऑफ किडनी टू फिल्टर ब्लड. इज इट क्लियर? और टू प्यूरिफाई द, फिल्टर भी बोल सकते हो, और टू प्यूरिफाई द ब्लड, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ द किडनी. ठीक है. सो थोड़ा सा डिटेल में इसमें बता देते हैं आपको. ठीक है. सी, ये जो किडनीज हैं इसके अंदर बहुत से नेफ्रॉन्स हैं. ठीक है. नेफ्रॉन्स, दीज आर द फिल्टर विच फिल्टर द ब्लड. ठीक है. सो व्हेन दीज फिल्टर द ब्लड्स, तो इसमें से फिल्टर एंड इट फिल्टर लिक्विड वेस्ट. Is it clear? The waste is filtered from our body in the form of a gas also, in the form of a solid also, and in the form of a liquid also. So the waste which is filtered by the kidney, that is in the liquid form, because blood is a liquid, and the kidney, the role or the function of the kidney is to filter the blood or to purify the blood. So the waste which is collected, that waste is collected in the form of a liquid. Is it clear? And from the kidney there are, I have already explained to you how many? Two ureters. Left and right. So these are connected to the kidney, and from these thin tubes the liquid is collected in a, this liquid is connected in a, इसे हम लोग बोलेंगे urinary bladder. Is it clear? There are two kidneys, and these two ureters are connected to the kidney.
Okay, that, and after that the liquid waste which is filtered from the bladder, that is collected in a urinary bladder. Okay, that is collected in the urinary bladder. And after that one more thing I explained you, that is urethra. One more thing which I explained you, that is urethra. So from here the liquid waste is move out from the body. From here the liquid waste is move out from the body, and this liquid waste, is it clear? liquid liquid waste, this liquid waste is known as urine. This liquid waste is known as urine. ठीक है, सो देखो ये किडनीज में ब्लड आता है, ठीक है, व्हेन द ब्लड कम इन द किडनी फॉर फिल्टर, देन व्हाट हैपन, नेफ्रॉन्स inside these kidney, both the kidney there are filters which are known as nephrons. इन filters को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन. इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, बुक पे नहीं दिया है, ठीक है, बट फिल्टर कौन होते हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, वेदर इट इज नॉट मेंशन इन योर बुक. सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव एक्सप्लेन यू, ठीक है. किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, दीज आर द फिल्टर्स विच फिल्टर द ब्लड. And when the blood is filtered, तो through the ureters, two ureters हैं, each connected to one kidney, one is the left and one is the right. So this thin tube, from this thin tube the liquid waste come into the urinary, in this urinary bladder, ठीक है. अब लिक्विड वेस्ट का क्या नाम है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिन, ठीक है, आप सब जानते हैं. और जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो आपको अपने से फील होता है कि वॉशरूम जाएं या टॉयलेट जाएं, है ना. ऐसा नहीं ना कि ऑल द टाइम वी यूज वॉशरूम, नो. व्हेन दीज यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड, जब ये पूरा लिक्विड वेस्ट से मीन्स यूरिन से ये पूरा फुल हो जाता है, अब इसमें एक्स्ट्रा जगह नहीं होती है स्टोर करने की यूरिन को, तो हमें अंदर से फीलिंग आती है कि हमें वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है. So in this manner, through the urethra, it moves out from the body. That is the whole function of excretory system in human body. ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं, रिपीट करा देते हैं, सो आपको इजिली अंडरस्टूड हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले द शेप ऑफ योर किडनी इज बीन शेप्ड है. वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड एट द बैक. जैसे आई एम टीचिंग यू, ये फ्रंट पोर्शन है मेरा, बैक में जो हमारी वेस्ट होती है, कमर उससे थोड़ा सा ऊपर जो होंगी आपकी दो किडनीज होती हैं, ठीक है. फिर नेक्स्ट बात इसमें हम आपको बताते हैं व्हाट इज द रोल और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस किडनी. सो द फंक्शन ऑफ दिस किडनी इज टू फिल्टर द ब्लड. ये क्या कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर रही है किडनी. इज क्लियर, इस फंक्शन इज टू फिल्टर द ब्लड. सो व्हेन द ब्लड कम इनटू द किडनी, सो किडनी में क्या है, नेफ्रॉन्स हैं, ये क्या है, फिल्टर्स हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है. ये क्या है, किडनी में आता है ब्लड, तो किडनी में नेफ्रॉन्स है जिसे फिल्टर्स बोला जाता है. ये किसको फिल्टर करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है. वी हैव टू किडनीज. इन द सेम मैनर वी हैव टू यूरेटर्स. सो दीज यूरेटर्स आर कनेक्टेड टू बोथ द किडनीज, वन टू द राइट एंड वन टू द लेफ्ट. ये थिन ट्यूब्स हैं. इन ट्यूब में से जो लिक्विड वेस्ट है वो पूरी किसमें कलेक्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. एंड द नेम ऑफ दिस लिक्विड वेस्ट इज नोन एज यूरिन. और जो लिक्विड वेस्ट होती है इसको हम किस नाम से बोलते हैं बेटा, यूरिन. इज इट क्लियर. एंड व्हेन योर यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्डेड, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल्ड हो जाता है तो आपको खुद अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है. एंड इन दिस मैनर थ्रू द यूरेथ्रा the waste, liquid waste, that you can say urine, is out from the body. So this is a internal organ, kidney, and its function is to filter the blood.
to remove impurities from the blood, and it remove waste in the form of a liquid, and it remove waste in the form of a liquid. So this is the function of your kidney. Is it clear? Now next, so in your classwork copy you draw the diagram of a kidney also, and best method, again I am repeating the same thing. First of all, write what are the parts of kidney, excretory system, or you can also say urinary system also. ठीक है? In the book maybe its name is given excretory system, that is also right, and if its name is given urinary system, that is also right. And liquid waste, what was the name of the liquid waste? That is urine. What was the name of the liquid waste? That is urine. And where many times is asked in the examination, where urine is collected, so it is collected in the urinary bladder. Where the urine is collected in the urinary bladder. See, 4-5 question I discussed with you in which type of question teacher can ask through the related topic. Maybe the question can be asked in the examination in such a manner, tell the name of the internal organ which filter the blood. So answer is kidney. ठीक है? Another question from the same topic, how many kidneys we have? So answer is 2. Okay. Next question from the same topic, what are the parts of the accident, or question can be framed in this manner, kidney is a part of which system? So kidney is a part of a excretory system. If you write, that is also right, and if you write urinary system, that is also right. How many ureters are? So number of ureters are also 2. So the waste, the kidney filter which type of waste? This is another question. ध्यान से सुनना बेटा, ये इतने ज्यादा क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से टीचर पूछ सकता है. ठीक है? सो द वेस्ट विच इज कलेक्टेड और फिल्टर फ्रॉम द किडनी, विच टाइप ऑफ वेस्ट इज इट? तो आंसर होगा लिक्विड. ठीक है? जो किडनी से वेस्ट फिल्टर हो रही है, दैट इज लिक्विड. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में, टीचर पूछ सकते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिक्विड वेस्ट कलेक्टेड बाय द यूरिनरी ब्लैडर? सो द नेम ऑफ द लिक्विड वेस्ट इज यूरिन. द नेम ऑफ द लिक्विड वेस्ट क्या है? यूरिन है. और वेयर द यूरिन इज कलेक्टेड? सी, सो मेनी क्वेश्चन आई फ्रेम फ्रॉम द सेम टॉपिक, दैट इज इंटरनल ऑर्गन किडनी. Where the urine is collected, कहाँ कलेक्ट होता है यूरिन? यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर. What was the name of the opening through which the liquid waste move out of the body? उसे क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा बोलेंगे. So try to understand student, more than 10-11 question I frame with the same topic. So in this manner teacher can ask a question to you in the exam. One more time I repeat it, listen it. After that, any type of question related to this topic will be asked in the examination. You all are able to give the answer if you watch the video. One question, where is, how many kidneys we have? Answer is 2. Which is the organ of the body who filter blood? Answer is kidney. ठीक है? What are the parts of a kidney is the part of which system? Answer is excretory system, or you can also write urinary system. Another question I am repeating for your good understanding. Okay, another question can be put from this topic, how many ureters we have? Answer is 2. Okay, so kidney filter. Next question, kidney filter which type of waste? Answer is liquid. Next question is, the liquid waste which is filtered by kidney is known as? So answer is urine. The liquid waste which is filtered by kidney is known as urine. And where the urine is collected? So answer is urinary bladder.
the opening through which the liquid or which the urine can goes out of the body, that is known as urethra. This is the opening through it goes out from the body. So many question can be framed from the topic excretory system. I hope you all are able to understand. Now next, bones. We will discuss about bones. So total number of bones in the adult human being, total total number of bones in adult human beings 206 bones. Is it clear? So at the birth of a child, अभी थोड़ा सा ये भी बता देते हैं, एट द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं बेबीज में? 300. बट एट द आफ्टर, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होने लगती है, बहुत से बोन्स ऐसे हैं फ्यूज होके, बहुत सी बोन्स आपस में फ्यूज होके मिलके सिंगल बोन्स बन जाती हैं. ठीक है. सो दैट इज द रीजन एडल्ट ह्यूमन बींग्स में फिर लास्ट में कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं. ये हायर क्लास में आप जाओगे तो ऑल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 206 बोन्स, एक ऐसे चैप्टर भी आएंगे जिसमें आपको फुल पता चलेगा कि 200 बोन्स आपको काउंट करके बता दी जाएंगी कि कितनी कितनी बोन्स किस किस पार्ट में है. जैसे स्कल कितनी बोन्स से बना है, नेक में कितनी बोन्स हैं, फिर आपके बैक बोन में कितनी है, आपका रिब केज जो ये चेस्ट बोन है, हाउ मेनी बोन्स आर यूज टू मेक दिस रिब केज. ओके, हाउ मेनी बोन्स आर यूज टू मेक दिस हैंड, राइट एंड लेफ्ट हैंड. ओके, फिर जॉइंट है हमारी बॉडी में दो, देखो हैंड से जॉइंट है, हैंड जॉइंट है, और हमारा लेग्स नीचे का लोअर लिम्ब अपर लिम्ब ज्वाइन है इससे. ठीक है. सो व्हेन यू गो इन हायर क्लासेस देन यू विल अंडरस्टैंड how the total number of bones in the adult human being is 206. Okay, now next topic is the bones. So how you come to know about the bones in your body? If you press your body, ठीक है, then you will feel here something hard. So these are the bones of your chest. If you press a hand, then also you feel some hard thing, that is also bones. If you press your fingers, then again you will feel something hard things. So what is this? This is also bones. Okay, when you press your leg also in the same manner, you will see that there are some hard things inside your body. क्योंकि हम इसको फील कर सकते हैं. वी आर अनएबल टू सी, फील इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आवर लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन क्या है? स्किन है, और स्किन ने पूरे बॉडी को क्या कर रखा है? कवर कर रखा है. इट इज क्लियर, द होल बॉडी इज कवर्ड विद द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, दैट इज स्किन. सो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी लाइक चेस्ट है, हैंड है, लेग्स है, फिंगर्स एंड आर्म्स, सो what you will find something hard. So these something hard things which you feel, that is your bones. And the total number of bones in the adult human being are 206. Is it clear? And all these bones are joined to form a framework. ठीक है, ये bones जगह जगह पे ज्वाइन है.
टू फॉर्म ए फ्रेमवर्क। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। फॉर इज इट क्लियर? एंड देखो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए हैंड, जॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफर बोन्स हैं इसमें, फिंगर, द नेम ऑफ फिंगर बोन्स, नेम ऑफ द रिस्ट बोन, नेम ऑफ दिस बोन, ऑल नेम्स आर डिफर, ओके। सो ज्वाइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज्वाइंट नहीं होते तो हमारी बॉडी क्या बिल्कुल स्ट्रेट होती, हैंड हमारे बिल्कुल ऐसे चलते। बट सी देयर वी हैविंग ए एल्बो ज्वाइंट, सो वी कैन inside movement, okay। So I will continue the topic in the next video. Thank you student.